Okay, Ji, let's begin solving. This is the start of the difficult questions that I sent you. I am solving them one by one. This is February, March. These are the difficult questions from February, March 2021, and the variant is 4-2. Okay, let's look at this first question. Unusual shape. So that's why I've kept it. It says a particle Q of mass 0.2 kgs is held in equilibrium by two light inextensible strings. Okay, so on a vertical wall and R is fixed at a point on a horizontal floor. The angle which strings PQ and QR make with the horizontal are 60 and 30 respectively. Find the tension in the two strings. There are two strings involved. Okay, so tension किस तरफ point करती है, tension उस तरफ point करती है. हम उसको देखते हैं. It's opposite to the point of resolution. Okay, so if I'm resolving here, so ये जो मुझे करना भी पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे force जो है वो एक लग रही है वेट की, तो ये वाली टेंशन ऊपर फेस करेगी और ये वाली टेंशन जो है वो नीचे फेस करेगी. Okay, so what I am going to do from there is resolve these forces. Okay, I'm just going to write P cos 60 and P sin 60 and R cos 30 and R sin 30. सही है, वो डॉटेड लाइंस ही बना देते हैं आगे. Okay, so it's going like that and it's going like that. So up equals to down. So up P sin 60, down 2 plus R sin 30. And left R cos 30 and right P cos 60. तो ये फिर आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं. आई थिंक ये हाफ होता है, so that makes it easier. 2R cos 30 is root 3 over 2. तो ये भी मैं exact इसलिए रख रहा हूँ because I think at some point I'm going to have to replace this. So 3R over 2 equals to 2 plus R over 2. So that gives me 2R over 2 equals to 2. So R equals to 2. Okay, एक टेंशन जो है वो 2 आ रही है, दूसरी वाली क्या आ जाएगी 2 root 3. It should be an easy answer, I think. 2 root 3.46 newtons. So tensions क्या हो गई, tension in R is 2 newtons and tension in P is 3.46. Okay, I thought this was an easy question. Let's see what else have I marked that I need to solve. Here a question है. So yeah, and I think this is a tough one. Okay, two particles A and B of masses this and that. 5.5 and m. तो मैं इसको रिजॉल्व कर लेता हूँ. ये 5 है, ये 10m है. The string passes over a smooth fixed pulley which is attached to the top of two inclined planes. The particles are initially at rest with P on the plane 30 degrees to the horizontal and Q on a plane at 45 degrees. The string is taut and vertical, and the particles can move on lines of greatest slope of the plane. A force of magnitude 0.8 newtons is applied to P, acting down the plane, causing P to move down the plane. It is given that m equals to 0.3. In this case, m जो हो जाएगा वो 0.3, तो वो 3 की force बन जाएगी, and the plane on which Q rests is smooth. Find the tension in the string. दोनों स्मूथ प्लेन पे है ना फिलहाल, तो आई थिंक दैट्स इजी. तो एट पी क्या हो रहा है हमारे पास, एट पी जो है वो एक वेट उसको नीचे लेकर आ रहा है, सही है, एंड दैट इज 5 sin 30 in this case. So at P the driving force is 0.8 plus 5 sin 30.
उसको रेजिस्ट क्या कर रहा है, उसको टेंशन रेजिस्ट कर रही है, सो -10 इक्वल्स टू 0.5a. ओके, एट क्यू क्या हो रहा है, द ड्राइविंग फोर्स इज, वो बन जाएगा 3 sin 30. दूसरी तरफ पुल कर रहे हैं तो पी इसको ऊपर जाना है, सो ये टेंशन इधर फेस करेगी, तो टेंशन -3 sin 45 इक्वल्स टू एम ए. ओके, एम इज 0.3, सो 0.3 है. Cancel this out. 0.8 plus 5 sin 30 minus 3 sin 45 equals to 0.8a. एक्सेलरेशन आ जाएगी मेरे पास, तो उससे मैं टेंशन निकालूंगा. 0.8 plus 5 sin 30 minus 3 sin 45. My angle is in radians में उसको चेंज कर. 0.8 5 sin 30 minus 3 sin 45. So I and divided by 0.8. So I am getting 1.473. Since this is not my final answer, I'm going to plug it in. 2.3 plus 3 sin 45. Okay, so मेरा आंसर आ रहा है T equals to 2.56 newtons. The tension is 2.56 newtons. That's easy, 5 marks. It is given instead that the plane on which Q is rests is rough and that after each particle has moved a distance of 1 meter, their speed is 0.6. The work done against friction in this part of the motion is 0.5 joules. Use an energy method to find the value of M. The energy method उसने कह दिया, तो work done by driving force equals to change in K plus change in P plus work done by resistance. सही है. अब work done by driving force, वो उसी तरफ पुल हो रहा है, उसकी ड्राइविंग फोर्स 0.8 है. 0.8 उसको ड्राइव कर रहा है. 0.8 और कितना डिस्टेंस मूव हो रहा था, डिस्टेंस मूव हो रहा था 1 मीटर का. तो 0.8 इंटू 1 प्लस टेंशन इंटू 1. कौन सा पार्टिकल Q जो है वो टेंशन की वजह से ड्राइव किया जा रहा है. सही है. चेंज इन के, सो हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. अच्छा जी, p में क्या चेंज आया, पार्टिकल P जो है वो नीचे आ रहा है. कितना नीचे आएगा, हम कहेंगे mgh. उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही होगी, तो m, ये 0.5 है ना, ये 0.5 है आई थिंक. तो m g, और उसकी हाइट कितने से डिक्रीज होगी, अगर वो 1 का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो ये बेसिकली जो डिक्रीज हो रही होगी वो 1 sin 30 हो रहा होगा. मैं लिखूँगा 1 sin 30. और दूसरे वाले पार्टिकल की पी जो है वो इंक्रीज हो रही होगी. कितनी इंक्रीज हो रही होगी, वो उसका वेट, उसका मास m है, ग्रेविटी 10 है, और वो कितना ऊपर जा रहा है, वो 1 sin 45 ऊपर जा रहा है क्योंकि उसका एंगल डिफरेंट है. तो 1 sin 45 जो है वो ऊपर जा रहा होगा पार्टिकल Q, तो वो P गेन कर रहा होगा. व्हाट इज़ वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो है वो फ्रिक्शन पे बता रहे 0.5. ओके, बट व्हाट इज रेजिस्टिंग पार्टिकल P, इट्स टेंशन रेजिस्टिंग पार्टिकल P. तो यहाँ पे आप T इंटू 1 भी करेंगे. सही है. ये बेसिकली टेंशन जो है वो कैंसिल आउट हो जाती है दोनों साइड पे, एंड यू एंड अप विथ इग्नोरिंग टेंशन एक्चुअली. तो 0.8 इक्वल्स टू, मैं इसको कुछ 0.6 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कर लूँ.
So 0.18, 0.5 plus m minus 5 sine 30, which is 2.5, plus 5 root 2 m. So yeah, I think that's 10 sine 45, 5 root 2 m plus 0.5. Okay, let's expand first. थोड़ी सी कैलकुलेशन मुझे करने में टाइम लग रहा है बिकॉज आई एम बीइंग केयरफुल अबाउट दिस. Okay, so zero point 0.8 plus 2.5 minus 0.09 minus 0.5. So 2.71 divided by 0.18 plus 5 root 2. M is 0.374. Okay, patiently, but I got to the correct answer. I had 7.5, 7 minutes or so to solve this. Okay, जी, March 22, I think, 4-2. It says a bead of A of mass zero point 0.1 kg is threaded on a long, straight, rigid wire which is inclined at sine inverse of this. Um, A is released from rest and moves down the wire. The coefficient of friction between A and the wire is mu. When A has traveled 0.45 down the wire, its speed is zero point 0.6. So let me draw this first. Okay. What I'm going to do is say that sine theta is equals to 7/25. अगर मैं कैलकुलेटर से cos थीटा निकाल लूँ तो कैलकुलेटर से cos थीटा जो आएगा वो 24/25 आ जाएगा. Okay. So in this case, then there's a ring that's 1 kg. So 1 sine theta and 1 cos theta. Acha. This is the normal reaction, and there's a frictional force mu into r. Okay, to show that mu equals to 0.25 मुझे जो है वो f equals to ma यूज़ करना पड़ेगा. So 1 sine theta minus mu r equals to 0.1a, और a निकालने के लिए मुझे जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के फार्मूलाज यूज़ करने पड़ेंगे. ओके, so v square equals to u square plus 2as, 0.6 square, 0 square, 2 times 0.6 times, sorry, 2 times a times 4 5. Okay, so what's 0.6 squared divided by 0.9? That's 0.4. So sin theta क्या है 7/25. Cos r कितना आ जाएगा? R is going to be 1 cos theta, so it's going to be 24/25. So yeah, 7/25 minus zero point 0.1 into 0.4. So mu आ रहा है 0.25. Okay, यही प्रूव करना था. Then another bead of mass 0.5 kgs is also threaded on the wire at the point where A has traveled 0.45 meters down the wire. It hits B, which is instantaneously at rest. A is brought to instantaneous rest in the collision. The coefficient of friction between A, B, and the wire is 0.75. Okay. So the first thing that's happening is there's momentum involved. So I'm going to say momentum before equals to momentum after. Okay. 0.1 है, 0.6 हो गई थी इसकी स्पीड, 0.5 है, 0 थी इसकी इनिशियल स्पीड, 0.1 थी, 0.0 हो गई स्पीड, और 0.5 v. So let's calculate this. 0.1 into 0.6 divided by 0.5, 0.12 आ रहा है मेरे पास. So
B when it started its motion is at 0.12. सही है अब A का जो तकरीबन सिस्टम वही रहेगा इट्स नॉट डिफरेंट तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू ए जो है वो स्टार्ट करेगा दोबारा अपनी जर्नी उसकी एक्सेलरेशन फिर से उतनी ही होगी तो ये बी जो है वो अपनी जर्नी जब स्टार्ट करेगा तो उसकी स्पीड जो होगी वो 0.12 होगी अब उसकी एक्सेलरेशन निकालने के लिए फिर से एफ इक्वल्स टू एम ए करना पड़ेगा तो 5 sin थीटा 5 cos थीटा आर एंड 0.275 आर तो 5 sin थीटा -0.275 आर कितना हो जाएगा आर इज गोइंग टू बी 5 cos थीटा इक्वल्स टू एम ए 0.16 ओके सो क्या होगा फिर अगर इसकी एक्सेलरेशन 0.16 है दोनों डिस्टेंस भी सेम ट्रैवल करेंगे दोनों का टाइम भी सेम होगा तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सही है सो t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू that is the answer to this question. Let's quickly move on to March 23. March 23 May, the diagram shows a block of mass D, 100 kg, supported by two sloping struts, AD and BD, which this is March 23 now. 42. Each attached at an angle of 45 degrees to fixed point A and B respectively on a horizontal floor. The block is also held in place by a vertical rope CD attached to a fixed point C on a horizontal ceiling. The tension in the rope is 500 newtons and the block rests in equilibrium and the magnitude of the force in each of the struts. The struts is more like it's definitely pulling it down क्योंकि वो equilibrium create करना होगा. Or so I think. Okay, so the tension in the rope CD is 500 Newton and the block rests in equilibrium. अब इसको रिजॉल्व करना है पहली तो बात यह है कि इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड्स आ रहा होगा 1000 kgs. Okay, 1000 newtons, sorry. Now I have to decide whether there's tension it's pointing like that or it's because it's not a rope technically, so it's a strut. आई कैन ऑब्वियसली सी के ऊपर 500 की फोर्स है और नीचे 1000 की फोर्स है तो इसको बैलेंस करने के लिए इन दोनों ने ऊपर पॉइंट करना होगा बिकॉज दिस हैज टू स्टे इन इक्विलिब्रियम ओके दैट इज़ माय हिंट कि भाई इसको जो है वो इस तरह सॉल्व करना है तो ये टी ए है ये टी बी है इनको जो है वो अपवर्ड्स रिजॉल्व करेंगे तो टी ए cos 45 टी ए sin 45 टी बी cos 45 and टी बी sin 45 okay so up equals to down and left equals to right. Up is 500, down is 1000. अच्छा अप में और भी है ना अप में जो है वो टी ए कॉस 45 टी बी कॉस 45 और डाउन में जो है वो 1000 तो 500 टी ए रूट 2 over 2 plus टी बी रूट 2 over 2 equals to 1000. Left is टी बी sin 45 so टी बी रूट 2 over 2
इक्वल्स टू टी ए रूट टू ओवर टू। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये जो है वो दोनों बराबर हो जाएंगे, सो टी ए शुड टी बी। ओके, तो अगर ये इक्वल हैं तो ये हो जाएंगे टी ए रूट टू ओवर टू प्लस टी ए रूट टू ओवर टू इक्वल्स टू 100,000, सॉरी 500 हो जाएगा दूसरी साइड पे। तो ये बन जाएगा रूट टू टी ए। ओके, मैंने ऐड रूट टू ओवर टू प्लस रूट टू ओवर टू, तो कैंसिल आउट होकर रूट टू बच जाएगा। सो 500 डिवाइडेड बाय रूट टू, so that is giving me 353.55. So TA is 353.55. So I'm going to say that TA is 354. Let me check if that is the correct answer. Yes, TA and TB are both 354 Newton. Okay. तो अनयूजुअल क्वेश्चन, टेंशन नहीं है, स्ट्रट है तो डिफरेंट होगा। A horizontal force of magnitude F newtons is applied to the block in a direction parallel to AB. Find the value of A for which the magnitude of the force in the strut AB is 0. Okay, so what I AD is 0, sorry, AD. Okay, so what I want to do is I want to get rid of this part. अब आप नोटिस करें कि ये वाला स्ट्रट तो ऐसे ही फोर्स को पुश करेगा, ये अभी भी जाहिर सी बात है डिसबैलेंस था, सही है। तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए जो आपकी फोर्स होनी चाहिए वो इस साइड पे होनी चाहिए। दिस इज पुशिंग दैट वे, तो दिस फोर्स शुड बी पुशिंग दैट वे। तो एफ की फोर्स ज़रूर होगी, वो किस साइड पे होगी, दैट फोर्स इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। I know my red color is gone. So that's force F. Okay, it's a horizontal force. Okay, so I'm going to again solve this. I'm going to say up equals to down, and left equals to right. Okay, so okay, so up is 500, down is 1000 only. Okay, there's another up as well. TB costs 45. TB costs 45. Okay, now this tension will also, it's going to change the magnitude of the force in each of the strut, because the balance is changing. Okay, because there were two struts before, they had the same balance, so now that's changing, so that's going to be equal. Then for the left, the force that's pointing to the left is TB sine 45, and the right force is now F. Okay, now I am going to use one of these to find out TB first. So 100 minus 1000 minus 500. So TB is then 707.1068. 707.1068 sine 45 equals to F. So F equals to 500. Okay. The idea in this question was that you had to carefully choose the balance of the question. Okay. So a block B of mass 2 kgs lies on a rough inclined plane angle at this. A light rope inclined at an angle of 20 degrees above the line of greatest slope is attached to B. The tension in the rope is T newtons. There's a friction force of F newtons acting on B. The coefficient of friction between B and the plane is mu. Okay. It is given that F equals to 5 and the acceleration of B up the plane is 1.2. Find the value of T. So up the plane. So up the plane is T cos 20.
minus f minus 20 sine 30 equals to ma. 2 into 1.2. So f is 5 in this case. T is 18.5. Find the value of t. The value of t is 18.5. Okay, find the value of mu. Frictional force is mu into r. Frictional force is 5. Nahin, okay, yeah, 5. So mu into r. R should be what? R should be equals to r plus t sine 20. I have to resolve this part as well. T sine 20 equals to 20 cos 30. Now that I found P, it was 18.5166, 5167 actually. 0.516, 20 cos 30. R is 10.7. Mu is 0.455. I hope that's the correct answer. Yes, that is indeed the correct answer. It is given instead that mu is zero point 0.8 and t is equals to 15. Determine whether b will move up the plane. Now this is about determining whether it's going to move or not, and I've been given the values of this. So what I'm going to do is I'm going to say that frictional force, I'm going to calculate everything separately. So zero point 0.8 into r. R would then be again from this equation. So r plus 15 sine 20 equals to 20 cos 30. So 20 cos 30 minus 15 sine 20. So R is 12.19, 12.19, 2.8, 9.752. Okay, so that's the frictional force. It's acting alongside the weight component. So that's 20 sine 30, which is then 19.752. Okay. Then the driving force is t cos 20. So 15 cos 20. What's 15 cos 20? 15 cos 20 is 14.095. So 14.095 is still less than 19.752. So particle will not move up the plane. Okay, that is the conclusion for this. I don't know if my numbers are there. Yeah, I think I can verify my numbers as well. They are the correct numbers.